Have you seen a recurring pattern in life? Most of us don't get what we want. 90% or 95% of us don't get our dream jobs, can't build our own dreams, can't achieve that goal that we set out to do. Why is that so? Well, I have seen it firsthand at IIM Lucknow while doing my MBA. Also, I've seen a lot of professionals who are absolutely the best minds in the country, superbly smart, very talented, but they're not able to figure that out. So, why does it happen? I'll share you the MBA perspective. You can apply these principles to other walks of life as well. So, why does it happen that even after getting the best of education, giving your best shot, a lot of people do not make it? Well, from an MBA perspective, I'll talk about what I saw at IML and also what I've seen after that in my work life. The sample size are people who have done their MBAs from the premium most institution in the country, who have great numbers of work experience, who are very smart from any angle or any criteria you want to judge them with. Okay, the first reason why this is happening is because they treat their degree as success. Why is it important? They feel that okay, मैं तो MBA कर लिया इस institution से, अब मेरा life set है. You generally see this perspective from or hear this perspective from lot of people who have not walked your journey. For example, last week मैं किसी से बात कर रहा था, someone senior in my organization who is not someone who has done his MBA from a top tier B school. उसने तो बोल दिया भाई तुम्हें क्या है, तुम अगर नौकरी छोड़ना चाहोगे तो तुमको ऐसे ही मिल जाएगा, तुम्हारा पैकेज इतना हो जाएगा 5 साल में. What they don't understand is that they are also seeing that success as a degree. They are not seeing कि मेरे को पैकेज मिलेगा, या फिर जो बंदे को आज मिला हुआ है, who has gone through this journey, is because he value added. उसके पास कुछ स्किल सेट्स था, उसने बिजनेस में ऐसा कुछ किया, अपने हाथ से कुछ खड़ा किया जो स्किल्स को अप्लाई करके, जिसके लिए उसको पैकेज मिल रहा है. उसको डिग्री किया है टॉप MBA स्कूल से या फिर बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई किया है, इससे आपको एक स्टार्ट मिलता है. आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज योर ओन क्रिएशन. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर डिग्री. यू जस्ट गेट द स्टार्ट. हाउ यू बिल्ड ऑन इट इज अप टू यू. दैट्स द फर्स्ट रीज़न. सेकेंड रीज़न इज दैट डिग्री जो है इट एम्पलीफाइज हु यू आर. मतलब आपको एक बेस देता है. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अनट्रू कि अगर आपके पास एक डिग्री है एक अच्छा जगह से, फॉर एग्जाम्पल अगर MBA है टॉप B स्कूल से, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, बट दैट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन. इट डज नॉट डिफाइन हु यू वॉन्ट टू बिकम. प्रोबेबली यू वॉन्ट टू बिकम द CEO ऑफ अ कंपनी, और यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, और यू वॉन्ट टू बिकम एन XYZ management graduate or manager in some organization, but that has to be a journey. वो डिग्री कर लिए इसके लिए नहीं मिलेगा. प्लीज अंडरस्टैंड दैट फैक्ट. नाउ डीप डाइविंग इनटू सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस कि क्यों नहीं हो पाता है. फर्स्ट पॉइंट जो दिखता है, कोई डिफरेंशिएशन आता नहीं है जो टॉप B स्कूल से पढ़े हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MBA और फर्स्ट 2-3 साल के बाद. 2-3 साल में मैं बात कर रहा हूँ. यू टेक द सेम CVs. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सिस्टम इन टॉप MBA स्कूल्स की हर एक जो सीनियर बैच है वो अपना जूनियर बैच को पहले मेंटरिंग देता है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अबाउट केस कॉम्पिटिशन्स, अबाउट हाउ टू हैंडल लाइफ, एंड दिस इज डन वेरी प्रोफेशनली. It is not a specific set of people helping a specific set of people. It's something designed so that the entire batch can take advantage of it, and that tradition is carried forward. So that tells you actually what to do. But when I sat for review of the CVs of the juniors, I used to see lot of similar points. It's the same thing that that person has done over and over again, or a lot of people have done. So what is the differentiation point for you? What will stand out is to build depth. Let's say for example you are highlighting your positions of responsibility or your internship or your side hustle. Please mention what you have learned from it and show it how it has differentiated you from others. That's very important. For example, अगर आप फिनेंस वाला कंपनी पे अप्लाई कर रहे हो, राइट, सब ने CFA कर लिया है, सब ने 2 or 3 कोर्सेज कर लिया है, all have taken economics majors, everyone has done everything. What will differentiate you is that if you have built models or you have done an internship from a top organization where you have solved a real world problem, वो शायद कुछ चुनिंदा लोग ही कर पाए हैं. That will differentiate you from the others.
सेकेंड रीज़न जो है वो है एग्जीक्यूशन लोग नहीं कर पाते हैं. व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि मार्केटिंग एग्जाम्पल से समझाता हूँ. मार्केटिंग में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं which are a guideline for you to use to solve any problem. Now, how did those framework come upon? किसी ने कभी उसको अप्लाई किया था and then they structured their thought. So, it's not a structured thought from the start. It is first done and then it is converted into a structured thought so that you can use the structured thought to solve the problems later on. But does that work in real life? Yes and no. Maybe कुछ ऐसा फ्रेमवर्क्स हुआ होगा जो आपने खुद से अप्लाई किया है कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. प्लीज मेंशन दैट एंड प्लीज मेंशन द एप्लीकेशन दैट विल हेल्प यू टू शो दैट यू हैव एग्जीक्यूटेड. यू डोंट ओनली नो द थ्योरी बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता है एंड यू हैव सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एज वेल. दैट इज वाई केस स्टडीज, दैट इज वाई गेस्टिमेट्स, दैट इज वाई रियल लाइफ सिचुएशंस आर थ्रोन एट यू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. एंड दिस इज ट्रू अक्रॉस डिफरेंट हायरिंग प्रोसेसेस. इफ यू सी, सिर्फ एमबीए का बात नहीं कर रहा हूँ. ये होता है इंजीनियरिंग का कोई भी अगर इंटरव्यू ले लो तो उधर होता है, यूपीएससी में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है. इन एनी फील्ड यू वर्क अक्रॉस यू विल गेट दिस डे इन एंड डे आउट कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका थिंकिंग प्रोसेस ऑन ग्राउंड जो है, कैन यू हैंडल दैट. दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एक गेस्टिमेट का कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल गेस्टिमेट आपसे पूछ लेंगे हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ पिज़्ज़ा कैन फिट into, let's say, a Boeing 737 plane. What is the correct answer? Will anyone know it? Most likely not, unless you do that experiment 4 or 5 times over and take the average. You have to take a good estimate and solve it. They're there to just understand your structure. How you structure it, you have to make your own frameworks and structure that answer. That's really important. Now, one more reason is fear of rejection. You will be surprised to know that even people who are lying at the topmost levels are also very afraid of rejection. They will not go and talk to 10 different people to understand what really works or take mentorship. They will not reach out to people on LinkedIn because they're afraid that no one will respond to them. They will not do cold emails. That's very important. Obviously, not everyone is going to reply. Your success rate might be 4 to 5%, but that's good. But you have to show intent because unless you reach out, the answer is always a big no. So, what do we learn? Is that to become the top 10% or if you want your dream job and your goals to succeed, what you have to do? One, have clear-cut clarity on what you want to do. You have to chase positioning and not everything. That's very important. Number two, understand what you have to do, learn about it, act about it, fail, take the feedbacks and improve. Number three, whatever you do has to be an improvement from your earlier model. That is what success is all about. Success does not mean कि कोई 100 से 10,000 चला गया. No, success is always about 1 से 2 पे जाना, 3 पे जाना, 4 से जाना, and then you reach to 10, and then you can probably compound and reach from 10 to 1,000 within a very short amount of time. But this is how it works. There is a practical steps, what I told you about why do not people achieve what they have set out for themselves and how they can achieve the same through an MBA example. Hope you have liked it. Yes, please do like, share and subscribe, and your support means a lot to me. Thank you so much for tuning in. Again, wishing everyone a very happy and a safe Diwali. Festive season is coming, so please do enjoy it. Thank you.